Welcome to the Acharya IAS current affair classes, and my name is Acharya Alok, and today we will discuss about the current affair of 26. As you all know, we on daily basis we take a topic and we discuss it in very depth. Okay, so be ready. Today's topic is street vendors. For prelims, National Association of Street Vendors of India SVA Fundamental Rights, DPSP, the Street Vendor Act. If we talk about the mains, the topics are significance of informal economy, challenges faced by street vendors, measures to be taken, related government initiatives. Let's talk why it is in news. Why street vendors in news? So why news? Recently, the Minister of Housing and Urban Affairs addressed the sixth meeting of National Association of Street Vendors of India with the theme as From Encroachers to Self-Employed. Who do we need to know about street vendors? About if we talk about a street vendor is a person who offers goods or sale to the public at large without having a permanent build-up structure from which to sell. दैट मीन्स ये है कि जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, जिनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बट दे अट्रैक्ट अ मास। वो बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को बिक्री करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स में बी स्टेशनरी इन द सेंस ऑफ दैट दे ऑक्यूपाई स्पेस ऑन द pavement of other public private space, or they may be mobile in the sense that move from place to place by carrying their wares on push carts or in baskets on their head. If we talk about the population, how much population belongs to this category, there is a substantial increase in the number of street vendors in the major cities around the world, especially in the developing countries, Asia, Latin America, and Africa. So, if we talk about if we talk about the population, then Asia, Latin America, Africa has have the largest population of street vendors. Around 49.48 lakh street vendors have been identified in India. Uttar Pradesh has the maximum at 8.49 lakh. हमारे उत्तर प्रदेश में 8,49,000 ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं। फॉलोड बाय मध्य प्रदेश में 7 लाख है, 7 लाख मध्य प्रदेश में, हमारे में 8,49,000। Delhi has only 72,457 street vendors. No street vendor has been identified in Sikkim. सिक्किम में एक भी आइडेंटिफाई वेंडर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें, आप वहां पे बैठो, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है, लेट्स हियर इट। सो आर्टिकल 19A(G), यानी आर्टिकल 19A(G) gives the Indian citizens the fundamental right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो 19 का जी पार्ट, जी कहते तो का खा गा घा अड़ा च श ए बी सी डी ई एफ जी, क्या जी। तो वो ये 19A हमें ये छूट देता है 19(1) का जी, कि भाई इंडियन सिटीजन है, कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी ऑक्यूपेशन प्राप्त कर सकता है, कोई भी उद्योग धंधा लगा सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है आर्टिकल 14 says of the constitution states that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India। देखिए कितनी खूबसूरती की बात है ये, कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के जो रचयिता थे, उनके दिमाग में कितना अच्छी चीज आई कि भाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये है कि सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वो बड़ा है छोटा है। अगर आप कोई मर्डर कर देता तो उसकी सजा सबके लिए समान है। हालांकि कुछ केसेस में ये अपवाद है, प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है और वैसी चीजों में अलग होता है। सोशल जस्टिस के बारे में, इफ वी टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस,
The preamble of India's constitution states that India is sovereign, socialist, secular, democratic republic and shall secure all its citizens justice, social, economic, and political and equality of status and opportunity. डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे डीपीएसपी कहते हैं आर्टिकल 38(1) आर्टिकल 38(1) कहता है directs the state to promote the welfare of the people by securing a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all institutions of national life. Article 38(2) directs to minimize the inequality in income status, facilities, and opportunities. That means कि ये स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा जो इक्वालिटी को बढ़ावा दे इनइक्वालिटी जो चाहे वो इनकम के उसमें हो फैसिलिटी के इनकम या वो अपॉर्चुनिटी के बारे में हम कहें तो ज्यादा से ज्यादा मिले आर्टिकल 39A डायरेक्ट द स्टेट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू इंश्योर द सिटीजन मैन एंड वुमन इक्वली हैव टू राइट टू एन एडिकेट मींस ऑफ लिवलीहुड Article 41 specify provides for right to work within the limits of the economic capacity of the state. Why is there a rise in street vendor? Street vendor जो है उनके में बढ़ोतरी कैसे हो रही है 8 लाख कैसे Firstly, lack of gainful employment coupled with poverty in rural areas has pushed people out of their villages in search of a better existence in the cities. These migrants do not possess the skill or the education to enable them to find better paid, secure employment in the formal sector, and they have to settle for work in the income informal sector. Secondly, there is another section of the population in these countries who are forced to join the informal sector. There, सब लोगों का ये इच्छा नहीं होती मतलब सब लोग ये नहीं चाहते कि हम भैया इनफॉर्मल सेक्टर ज्वाइन करें but some are forced to do work in their factories. Secondly, there is another section of the population in these countries who are forced to join the informal sector. These are workers who were employed in the formal sector. They lost their jobs because of closures, downsizing, or mergers in the industry they worked in and they are or their family members had to seek low paid work in the informal sector in order to survive. What are the challenges faced by the street vendors? तो कौन कौन से challenges है lack of space जगह की कमी है बहुत masters plans prepared for our cities do not allocate space to vendors hawkers as planners blindly imitate the western concept of marketing ignoring Indian tradition. देखिए क्या होता है कि हम ब्लाइंडली फॉलोअर्स हैं पश्चिम के पता नहीं हमें क्या ऐसा मिल गया है क्या क्या ऐसा हमने देख लिया है कि अंधान पर करते रहते हैं हम पश्चिम का बट इफ वी अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर तो हम जानेंगे भाई इंडियन कल्चर में अगर मार्केट आप बना रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए रोड साइड ज्यादा होनी चाहिए रोड साइड अगर ज्यादा नहीं हो क्योंकि हमारा ये एक आदत होती है अगर आप शॉप्स में देखेंगे कि लोग अंदर रखते हैं और उतना ही सामान बाहर भी रखते हैं तो उस हिसाब से एक प्लानिंग करनी चाहिए जो नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं tackle multiple authorities. The vendors have to deal with multiple authorities, the municipal corporation, police, Thana, as well as traffic, regional development authority, district administration, local panchayat, and so on. This lead to exploitation and extortion. कहते हैं भैया पुलिस थाने से कॉल आएगा हाँ भैया इतने इतना पैसे पहुंचा देना ठीक है इन मेनी केसेस द पॉजिटिव स्टेप्स टेकन बाय वन अथॉरिटी आर नलिफाइड बाय द एक्शंस ऑफ अदर्स अब क्या करता है एक ने कोई अच्छा काम किया दूसरे ने उसमें रोड़ा अड़ा दिया तो ये भी गलत है ये समस्या है इंस्टीड ऑफ रेगुलेटिंग वेंडर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रीट देम एज अ nuances and an irritant their policy and actions are aimed more at removing and harassing them rather than at regulation आप देखते होंगे मैं तो देखता रहता हूँ अपने आसपास कि भाई किसी दिन क्या हुआ कि वो सबने जितने भी खोके वोके लगे हैं सब एक दिन आ गए और सब तोड़फाड़ कर दिया सब निकाल कर दिया तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दिस इज नॉट a good thing this should not be done okay frequent eviction the regular eviction carried out by the district or municipal administration they fear the very sight of the eviction team which is known locally by different names extortion racket cases of रंगदारी टैक्स हफ्ता और कॉमन हफ्ता लेते हैं बहुत सारे और हर जगह ही कॉमन है अब बेचारा गरीब आदमी पड़ाकी का है गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है उससे तुम रंगदारी 100 रुपए 200 रुपए ले रहे हो खाने में भी जाती है खुलना चलता है तो ये रोकने की जरूरत है और आप जैसे सिविल सर्वेंट होंगे जो एक्टिव होंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे संघर्ष देख के जाएंगे वही ऐसा काम करेंगे रोकिए
In many cities, vendors have to part with substantial money in order to ply their trade. What are government's initiative of for street vendors? अब भारत सरकार ने क्या किया है तो सेवा निधि या एसबीए निधि स्कीम was launched to benefit over 50 lakh street vendors who had been vending in urban areas, including those from surrounding peri-urban rural areas. It also aims to promote digital transaction through cash bank incentives up to an amount of 12,000 per annum. अच्छा अगर आप कैश फोन पे वगैरह करते हैं तो 12,000 रुपीज लोगों को इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया क्या कह रही है नासवी या NASBI इसका तो नाम ही नासवी है नासी करेगी। नासवी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ livelihood rights of thousands of street vendors across the country. The main objective was to bring together the street vendor organization in India so as to collectively struggle for macro level changes. The Street Vendors Protection of Lively and Regulating on Street Vending Act 2014. तो देखो 2014 में जो एक्ट आया है वो डायरेक्टली आस्क किया जा सकता है बेटा आप कुछ कर नहीं रहे हो इसको ऐसे लिखो 2 to 50 ठीक है दोस्तों। Let's talk about the act defines a street vendor as a person engaged in vending of article of everyday use or offering services to the general public in any public place or private area from a temporary built up structure or by moving from place to place. Way forward आगे की कहानी क्या है क्या बन सकता है क्या हो सकता है Despite multiple schemes running in for the street vendors, there are various gaps in the implementation, identification, awareness, and accessibility of various schemes which should be plugged in timely manner. Benefit like maternity allowances, accident relief, natural death compensation, education support for children for higher studies, pension during any classes should be provided to them. States should be asked to ensure the street vendor are not harassed by authorities like municipal corporation, police, finance, rangdari, etc. As all they are asking a right to livelihood. ठीक है साहब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया मेंस में वो क्या है भैया कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन डिटरमाइन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इस पर आपको विचार लिखने थे ठीक है। सेकंड हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस ये इट कम्स अंडर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन जो जीएस पेपर 3 है वो है हमारा बेटा तुमसे क्या ना रुपये में दे आया हूँ कि 10 की जलेबी दे दो ये सामने जो ये बगल में इधर वाले दुकान वाले ये सर ने 10 की जलेबी मंगानी जैसे क्या हाँ ये इधर वाली दुकान से मैं रुपया दे आया ना इधर वाली से पल्लव वाले तो हर शय उनसे नहीं इधर वाले बने हुई होंगे। हाँ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस प्रीलिम्स में देखो क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कौन कौन सा टॉपिक है तो क्लाइमेट फाइनेंस कॉप 26 क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी ट्रिपल सी ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ ठीक है। मेंस में आ जाता है क्लाइमेट फाइनेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्लाइमेट ये न्यूज में क्यों है वाई न्यूज तो रिसेंटली द UNFCCC that is United Nations Framework Convention on Climate Change प्रेसिडेंट आलोक शर्मा अरे हम ही बना दिए शर्मा नहीं है आलोक ओके visited India to discuss India's implementation of its COP26 commitments. He also stated that the mechanism is being put in place to achieve the target of climate financing USD 100 billion by 2023. मतलब एक चंदा इकट्ठा करना है इन गरीबों को और वो टारगेट है उनका 2023 तक अगले साल तक 100 बिलियन और आप बन जाए यूएस डॉलर वो भी 100 बिलियन यूएस डॉलर जैसे UNFCCC यूनाइटेड फाइनेंस क्लाइमेट यस यूनाइटेड फाइनेंस क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है। गुड मॉर्निंग व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस अब है क्या ये बीमारी क्या है क्लाइमेट फाइनेंस तो it refers to local, national or transnational financing drawn from public, private and alternative sources of financing
दैट सिक्स आप ले लो, एक ही आधा आधा कर दो, आप ले लो बेटा एक, बाकी आप वो लिख लो, है ना। हाँ तो इट रेफर्स टू, वाह, गर्मी गर्मी है ना। The UNFCCC, that is United Nations Finance Convention on Climate Change, or Kyoto Protocol, and the Paris Agreement call for the finance assistance. जलेबी खा लो पहले। हम्म, गरम गरम जलेबी ना, मजा आ। दो दूनी चार, ऊपर लगाओ हाथ से, दो के ऊपर दो की हाथ। दोनों जने आगे पानी भर लीजिए बेटा, ये पानी निकाल दो, पानी भर ला पानी। अंदर से होल्ड ऑन। ओके, this is in accordance with the principle of common but differentiated responsibility and respective capability, CBDR. In COP26, new financial pledges to support developing countries in achieving the global goal for adapting to the effects of climate change were made. New rules for the international carbon trading mechanism agreed at COP26 will support adaptation funding. सिग्निफिकेंस क्या है इसके फायदे क्या है, महत्व क्या है इसका? So if we talk about the significance, then climate finance is needed for mitigation because large scale investment are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of changing climate. Climate financing recognizes that the contribution of countries to climate change and their capacity to prevent its cope with its consequences vary enormously. Hence, वो लिख लिया आपने देखो, तीन की घात पे, तीन पे भी दो, चार पे भी दो, चार चौक 16, पचम 25, छः 36, छः सत्ते, छः सत्ते, सत्तू सत्तू 49, अट्ठो अट्ठो 64 ऐसे। आपको टाइम नहीं पता क्या टाइम है? अरे तो जल्दी नहाया करो ना बेटा, अब 7:41 से 15 मिनट बाद चले जाएंगे तो कहाँ पड़े ले घंटा। 7 बजे आएगा, मैं 7 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे, 7 या 7:05 पर, ठीक है। जलेबी भी चली गई तुम्हारी, नुकसान हो गया एक और, जलेबी ना खाई मैंने। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस में क्या क्या है। हाँ, क्लाइमेट फाइनेंस इज नीडेड टू मिटिगेशन बिकॉज लार्ज क्या चाहिए हो गया। क्लाइमेट फाइनेंस इज क्रिटिकल टू टैकल द इशू। क्लाइमेट चेंज जो है या क्लाइमेट फाइनेंस जो बनाया गया है, क्लाइमेट चेंज क्या है?
कि जो कार्बन का इमिशन हो रहा है और खासकर जो डेवलपिंग कंट्री ध्यान नहीं दे रहे और अपना प्रोडक्शन के चलने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा इमिशन करा रहे हैं कार्बन का, है ना। तो उसे रोकने के लिए कार्बन क्लाइमेट फाइनेंस बनाया गया है और इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, 100 बिलियन का डॉलर, $100 बिलियन चाहिए। What is the USD 100 billion target and why does it matter? In 2009, the UNICEF COP15 held in Copenhagen. Copenhagen जो है वो डेनमार्क की राजधानी है. The developed countries parties to achieve meaningful mitigation action and transparency or implementation jointly set a target of USD 100 billion a year by 2020 to address the needs of developing countries. The climate finance goal was the formally recognized by the UNFCCC Conference of the Parties at COP16 in Cancun. Don't talk. Don't talk now. बोलना नहीं, काम करो. At COP21 in Paris, parties extended the $100 billion goal through 2025. After COP26, there was a consensus that the developed nations will doubt their collective provisions of adaptation finance from 2090 levels by 2025. In order to achieve this balance between adaptation and mitigation, what is the green financing? So, if we talk about the green financing, to assist the provision of climate financing, the UNFCCC, that is United Nations Financial Convention for Climate Change, establish a financial framework to give financial resources to developing nations parties. The finance structure also supports the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. It specifies that the financial mechanism operation can be entrusted to one or more existing international entities. Since the convention's entrance into force in 1994, the Global Environment Facility (GEF) has acted as the financial mechanism operating institution. Parties established the Green Climate Fund, that is GCF, at COP16 in 2010 and designated it as an operating entity of the financial mechanism in 2011. The financial mechanism reports to the COP, that is the, I don't know, which determine its policies, programs, priorities, and basic financing strategy. अब आप समझदार हो गए, फोर फोर या सिक्स में फाइव का डायरेक्ट स्क्वायर करो, फाइव फाइव या 25 पचास 25 छः पे स्क्वायर करो, एक्सटेंड 25 ऐसे 50 का होगा फटाफट. अदर फंड्स की बात करें, नहीं गलत नहीं था, अगर ये लिख रहे हो तो ये मत, ठीक है, या तो घात मत लगाओ या फिर ऐसे देखो दो गुणा, या तो देखो दो गुणा दो या फिर घात लगा के देखो. एक काम करो, 4 9 14 25 26 घात लगा के करो. ये अदर फंड्स क्या है, इसके अलावा क्या क्या फंड्स हैं? इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द जीईएफ एंड द जीसीएफ, पार्टीज हैव एस्टैब्लिश्ड टू स्पेशल फंड्स. फर्स्ट जो फंड है वो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एससीसीएफ, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड. सेकंड इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एलडीसीएफ. बोथ आर मैनेज्ड बाय द जीईएफ एंड द एडेप्टेशन फंड एएफ, established under the Kyoto Protocol in 2001. तो कोई पूछे कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 2001 में आया. At the Paris Climate Change Conference in 2015, the parties agreed the operating entities of the financial mechanism GCD, GEF, SCCF, and the LDCF shall serve the Paris Agreement. What the India's initiative regarding climate finance? देखिए बेटा, whatever, whenever you write an answer, जब भी मेंस का कोई भी आप आंसर लिखेंगे, whenever you write an answer, you must realize this thing that you should put the इंडिया पर्सपेक्टिव. इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें इंडिया को क्या नुकसान है, इंडिया को क्या फायदा है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि व्हाट आर इंडियाज इनिशिएटिव रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस? नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC. It was established in 2015 to meet the cost of adaptation to climate change for the state and union territory of the Indian that are particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. National Clean Energy Fund.
The fund was created to promote clean energy and funded through an initial carbon tax on the use of coal by industry. जो carbon tax भी लगा दिया गया government ने. It is governed by an inter-ministerial group with the financial secretary as the chairman. Financial secretary जो होता है वो chairman है इसका. Its mandates its mandate is to fund research and development of innovative clean energy technology in the fossil and non-fossil fuel based sector. National Adaptation Fund NAFCC के अलावा National Adaptation Fund भी बनाया गया है. The fund was established in 2014 with the purpose of rupees 100 crore. मतलब 100 crore पहले से उसमें लगाए गए थे with the aim of bridging the gap between the need and available funds. The fund is operated under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC. आगे का रास्ता क्या वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट असिस्ट एंड वर्क विद डेवलपिंग नेशन. जो ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें ये सोचना चाहिए समझना चाहिए कि भाई उन्हें काम करना चाहिए जो छोटे कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ. एनर्जी ट्रांजिशन एंड गेट financing of climate resilient infrastructure, thus ensuring the former delivered on the 100 billion goal. और जो 100 billion का गोल बनाया है क्लाइमेट फाइनेंस ने 2023 तक उसे पूरा करना है. Ensuring the finance is better targeted at reducing emission and vulnerability. जो emission है कार्बन उत्सर्जन है उसे कम से कम होना चाहिए. vulnerability जो बनी हुई है वो कम से कम होना चाहिए. Learning and improving from recent experiences, particularly the green climate funds that's to work. और green climate fund जो बनाया गया उसका भी कुछ इंतजाम होना चाहिए. अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भाई साहब और मेरी बहन भगनी हो. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन that was with reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement are 2016 में क्वेश्चन आया है. The agreement was signed by all the member countries of the UN United Nations and it will go into effect in 2017. पहला क्वेश्चन था. The agreement aims to limit the greenhouse gas emission so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate 100 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate. यानी वन इसमें और ऑप्शन दिए 1 and 3, 2 and 3 and 1 to 3. तो देखिए पहला जो था वो गलत है. 2017 में नहीं आया था ये आया था 2015 में. तो पहला गलत हो गया. और जो पहले जो ऑप्शन है वो पहले में है और तीसरे में. तो दो कैंसिल आउट हो गए. दूसरा बचता है दूसरा और दूसरा तीसरा. तो तीसरा ये कह रहा है कि भाई 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं. नहीं, इसका जो गोल है वो 2023 तक है और 25 तक है. फर्दर अब जो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा कि जो द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड दिसंबर 2015. ये कह रहा है कि दिसंबर 2016 में हुआ था. नहीं, 2015 में COP21 इन पेरिस फ्रांस बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी कॉप का जो फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी to the United Nations Framework Convention of the Climate Change, that is UNFCCC. The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature. ये तो हो ही गया. स्टेटमेंट 2 वाला जो हमने कहा था वो करेक्ट है. भाई जो एग्रीमेंट ये चाहता है कि 2 डिग्री जो बढ़ रहा है तापमान बढ़ने की संभावना है वो 2 डिग्री से कम रहा जाए और इवन 1.5 डिग्री ही रहा जाए. The Paris Agreement entered into force on 4 नवंबर 2016. जो पेरिस एग्रीमेंट था वो 4 नवंबर 2016 में आया था. 30 days after the date of which at least 55 parties to the convention according in the total for at least an estimate 55% of total global gas emission has deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the depository. Hence, statement 1 is not correct. ठीक है. Additionally, the agreement aims to strengthen the ability of countries to deal with the impacts of climate change
in line with their own national objectives. Last, the Paris Agreement requires all the parties to put forward their best effort to nationally determine contribution and to strengthen these efforts in year ahead. Strengthen these This includes requirement all that parties report regularly to their emission and on their implementation. There will also be a global stock pay every 5 years to assist the collective progress towards achieving the purpose of the agreement and to inform further individual action by the parties. Uh, Through the Cancun Agreement that came into the force in 2010, developed country parties committed to a goal of mobilization jointly USD, that is US dollars, 100 billion per year by 2020 to address needs of developing countries. Further, they also agreed that prior to 2025, the conference of the parties serving as the meeting of the parties of the Paris Agreement shall set a new collective quantified goal from a floor of USD 100 million per year. Hence, statement 3 is not. ठीक है? मेंस का एक एग्जाम्पल 2021 में पिछले साल आ गया, देखिए पिछले साल क्या आ गया, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी सीओपी टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी, व्हाट आर द कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। हम लोग घबरा जाते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आप जितने भी खासकर एनवायरमेंट, ये क्योटो प्रोटोकॉल है और आपका ये पेरिस एग्रीमेंट है, सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये सारे जितने भी कन्वेंशन है, कोई जेनेवा कन्वेंशन है और पता नहीं कौन कौन से कन्वेंशन है, ये सारे कन्वेंशन को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और इनको अपडेट रहिए। आप डेली बेसिस पर अपडेट रहना, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई एम आलोक, आचार्य आलोक, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद।